हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू MEG MA इंग्लिश के नए सब्जेक्ट MEG 19 के बारे में। दिस इज ऑस्ट्रेलियन नॉवेल एंड टुडे वी विल डू ब्लॉक 7 contemporary novel and the topic is Peter Carey's True History of the Kelly Gang. Australian novel a comparatively new subject and these are the blocks Australian novel, the beginning, from colony to federation, new directions, war novels, fiction, multicultural writing, contemporary novel and contemporary novel part 2. The topic that we are going to cover belongs to block 7. We will keep on covering rest of the topics too, but for covering all the topics in detail along with PDF, live class discussion, practice tests, you are suggested to join the online classes. पीटर कैरे के बारे में जानते हैं। पीटर फिलिप कैरे एक ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट हैं। कैरे हैज वन माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 3 times, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है and is frequently named as Australia's next contender of the Nobel Prize in Literature. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार नोबेल प्राइज जीते हैं बट ओनली वंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. लेट अस सी बाय whom. Australia's only Nobel laureate in literature is Patrick White. Patrick White, who has written a very famous novel, was. In 1973, Patrick White was awarded the Nobel Prize in Literature since 1915. Since 1915, there have been approximately 15 Australian awards in Nobel field, but almost half of these prizes have been awarded in the field of physiology or medicine. Only one literature award. The next will surely be won by 2 times Booker Prize winner Peter Carey. अब बात करते हैं ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग की. ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग गिव्स रीडर्स एन अनफॉरगेटेबल पोर्ट्रेट ऑफ द मैन बिहाइंड द मिथ. एक स्टोरी चली आ रही है एक गैंग की, उस इंसान की ही स्टोरी है, उसके एक ट्रस्टेड फ्रेंड की स्टोरी है. And that person is not only a trusted friend, the person is a loving son, the person is a loving father, जो कि अपनी इंटेग्रिटी को अपनी लाइफ सेव करने के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर पाए. He could easily save his life and move on, but he stayed behind for his family, for the people he loved. True History of the Kelly Gang, novel by Australian writer Peter Carey, based loosely on the history of the Kelly Gang. This Kelly Gang is quite famous in Australia. इस गैंग की हिस्ट्री पर ही बेस्ड है बट अ फिक्शनल वर्जन. It was first published in Brisbane by University of Queensland Press in 2000 and won the 2001 Booker Prize as well and the Commonwealth Writers Prize in the same year 2001. Story has been written from one of the member of the Kelly gang जिनका नाम नेड है और प्रेजेंटली उनकी एज 12 दिखाई जाती है जब स्टोरी की शुरुआत होती है. As the story opens, Ned Kelly is describing his father John Red Kelly. जॉन एक आयरिश मैन थे जिनको कि ऑस्ट्रेलिया के प्रिजन में भेजा गया था. देन ही सेटल्ड इन द कॉलोनी ऑफ विक्टोरिया. In the colony of Victoria, he met and married a girl named Eileen and the pair moved to a rural town called Avenel. John के continuously clashes होते रहते थे with the local police, local law enforcement and eventually he dies in prison when Ned is only 12. The family resettles in northeast Victoria under the Land Grant Act. Land Grant Act के अंडर कुछ recent criminals को, उनकी families को या नए settlers को land provide कर दिया जाता था by the government. So Ned की mother attempt करती हैं कि बच्चों को किसी तरीके से पाला जाए and she runs a shebeen. Shebeen एक ऐसा place होता था जहाँ पर liquor, food, snacks serve किए जाते हैं but unlicensed without the permission of the government. So this also used to be one kind of crime. And she takes many lovers as well. उनको लगता था कि अगर बहुत सारे उनके lovers हो गए तो it will be easy to take care of the kids and one of the lovers name is bush ranger Harry Paul. Harry Paul is the name. He is a bush ranger. So this person Paul agrees to
टेक ऑन दी यंग नेड एज एन अप्रेंटाइज। ये यंग नेड है, अ, उनको एज अ ट्रेनी लेने की कोशिश करते हैं अपने साथ हैरी पॉर। सो नेड विद द नॉलेज ऑफ लैंड हाइडआउट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर बुश रेंजिंग। हैरी पॉटर को ऐसा लगता है कि हम आसपास के जंगलों में, एरियाज में, लैंड्स में, हिल्स में किस तरीके से छिपना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, काइंड ऑफ अ गैंग ऑफ डकैट्स। उस तरीके से नेड को अपने साथ ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। केली इवेंचुअली लीव्स पॉर। केली धीरे धीरे, केली को ये सब पसंद नहीं आती है, क्राइम की दुनिया। केली इवेंचुअली लीव्स पॉर एंड रिटर्न्स टू हिज फैमिली सेटलमेंट वेयर ही इज shown making strong attempts to live an honest lifestyle. केली, हमारे यंग नेड केली को बिल्कुल भी ये क्रिमिनल लाइफ पसंद नहीं आती है। ही ट्राइज हिज बेस्ट कि एक शराफत से भरी जिंदगी जी जाए, एक ऑनेस्ट लाइफस्टाइल। Bush ranger. This word is being repeated and will keep on being repeated throughout the video, so it is necessary to know the meaning. A criminal who takes refuge in and operates from the wilderness, usually heavily forested areas. तो अगर आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है तो whole gang of गब्बर could be called bush ranger. बट बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आप तो शराफत से जीना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया और लॉ आपको जीने नहीं देता शराफत से। द सेम थिंग हैपेंड विद केली। केली को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है फॉर द रिसेप्शन ऑफ अ स्टोलन हॉर्स। उनके पास कोई स्टोलन हॉर्स था, ऑल्दो उन्होंने बहुत कहा कि मैंने जिससे खरीदा है, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी कि दिस इज स्टोलन, बट नोबडी लिसन्स टू हिम। वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। ऐसी मेंटेलिटी होती है ना लॉ की भी, सोसाइटी की भी, कि इफ योर फादर हैज बीन क्रिमिनल, यू आर ऑल्सो अ क्रिमिनल। अगर स्टोलन हॉर्स आपके पास मिला, दैट मीन्स इट इज स्टोलन बाय यू। सो ही इज सेंट टू जेल फॉर 3 years। जेल से वापस आने के बाद कुछ साल वो एक मिल में काम करने की कोशिश करते हैं। ही वर्क एज अ मिल बट is drawn back to bush ranging, drawn back to that crime basically. कैसे? Let us see. There is a police person, Constable Alex Fitzpatrick, who starts having an affair with Ned's younger sister, Kate. नेट को पता चलता है कि this constable is having so many affairs and he has multiple mistresses in the other towns and has no intention of marrying Kate. नेट की मदर एलिन एक बार इस कांस्टेबल को एक गन लेकर वॉयलेंस के साथ डराने की कोशिश करती है, forces him to getting married to Kate. So during this violence, Ned shoots him in the hand in self-defense. इस violence के duration में Ned से गलती से गोली चल जाती है और कांस्टेबल को लग जाती है in self-defense. Although सिर्फ उनके हाथ पर ही गोली लगती है and he dresses the wound and Fitzpatrick leaves while promising that no action will be taken against his family. Fitzpatrick जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, it is okay, everything happened unknowingly and in a fit of anger I'll not report this event. लेकिन उसके एकदम बाद पुलिस आ जाती है और नेड को और उनके यंगर ब्रदर डैन को अरेस्ट करके ले जाती है। Somehow they are able to escape before going to jail. Ned and the younger brother Dan दोनों escape हो जाते हैं in the hills of northeast Victoria and they are joined by the two friends as well, Steve Hart and Joe Byrne. And this is how this gang came into existence, known as the Kelly Gang. Now these people are escaped. What will police do? Police arrests the mother. Kelly's mother is eventually arrested along with her baby daughter and imprisoned in Melbourne as a lure for Kelly to give himself up. अगर मदर को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो केली को सरेंडर करना ही पड़ेगा. A detachment of 4 policemen is eventually sent to kill the quartet. इन चारों को मारने के लिए पुलिसमैन की एक फौज भेजी जाती है. After efforts to arrest them prove unsuccessful. इनको बोला जाता है कि अगर अरेस्ट करना है तो पहले अरेस्ट कर लीजिए और अगर अरेस्ट करना अनसक्सेसफुल होता है तो मार ही दीजिए. So the Kelly gang ambushes them at Stringbuck Creek. एक नदी के आसपास एक एस्टेब्लिशमेंट बना लेते हैं और इस
4 पुलिसमैन में से 3 को मार देते हैं। After this, the stories about this whole gang starts being famous, that they are doing some robbery, they are doing some kind of crime. Actually, yes, they are doing robbery and kind of Robin Hood. Robin Hood का भी आपने सुना होगा. Part of the money, whenever they rob anything, they give to lower class settlers in Victoria, and these lower class settlers help giving them shelter and food items, eatables, everything. In every manner, the lower class people, lower class settlers of Victoria also helped the whole four gang, because that whole settlement of Victoria knew it very clearly that these people, all these four, are not bad by heart. On one of the adventure, Ned meets a girl named Mary Hane, Irish girl, and they fall in love and she becomes pregnant, and it is this girl who persuades Ned to write his story in form of autobiography, because she knows it very well that this whole gang is always in the search of police and the bad books of police. Anything can happen anytime. There can be an arrest, there can be violence, and there can be death as well. So she persuades her husband or her lover, we can say, write down a story, write down an autobiography, so that the future child can come to know who my father was. After many successful robberies and a sufficient amount of money has been captured, this girl, Mary Hane, moves to San Francisco for the safety of her already born son and an unborn child. कैली remains behind. कैली पीछे रह जाते नहीं जाते अपनी वाइफ के साथ, because he has to work for the release of his mother Eileen. For how long this cat and dog fight could continue, the gang is eventually cornered by a large squads of dozens of policemen. बहुत सारे पुलिसमैन आते हैं और पूरे गैंग को चारों तरफ से कैप्चर कर लेते हैं. हिंदी मूवीज देखी होगी ना आपने, एक डायलॉग होता है फेवरेट पुलिस का कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया, समथिंग लाइक दैट हैपेंस. सो गैंग एक टाउन में छुप जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपना होस्टेज बना लेते हैं. So they take numerous hostages and constructed several suites of armors. अपने लिए बहुत सारे स्टील के आर्मर्स, स्टील की ढाल भी बना लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए. और उनके एक प्रोमिनेंट होस्टेज का नाम है थॉमस कर्नो. थॉमस कर्नो एक स्कूल मास्टर हैं जो कि केली को एंकरेज करते हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए, बहुत सिंपैथाइज करते हैं उनके साथ, उनकी राइटिंग का सैंपल भी देखते हैं जो कि वो लिख रहे हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए. बट दिस पर्सन कर्नो बीट्रेज द गैंग बाय वार्निंग द पुलिस. पुलिस को वार्न कर देते हैं किसी तरीके से, और इनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री जो है इनको एक हीरो की तरह देखेगी, बिकॉज इन्होंने एक गैंग को पकड़वाया. The policemen surround the whole town and engage in a furious shootout with the armor-clad gang. ये gang के पास तो armor थे, अपने ढाल थे बड़े बड़े स्टील के बने हुए, but they seriously wound Ned Kelly and kills rest of the 3 members. बाकी 3 members की तो डेथ हो जाती. केली's narrative stops here. केली का नरेटिव यहीं पर स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि एक सेकेंडरी नरेटर ने नरेट करनी शुरू कर दी है ये टेल, एंड द होल टेल देन इज फॉलोड बाय द ब्रूटल गन फाइट एंड केलीज डेथ बाय हैंगिंग. केली को हैंग कर दिया जाता है. दैट होल स्टोरी इज नरेटेड बाय अ सेकेंडरी नरेटर जिनको नाम दिया जाता है SC. Although Kelly is considered to be a person of a gang by the law, by the police, but he is considered a hero by the locals. Kelly dies the death of a hero to the people of Victoria where they were hiding, and he is still considered to be a legend. ये जो भी myth है Kelly gang की, that is considered to be a very legendary. Can you see this line? A man can never outrun his fate, nor the crimes of his past. You have seen that Kelly and his mother tried hard to live a normal, decent, honest life, but the society did not allow them, the law did not allow them. The story of Kelly, an outlaw, a criminal who became a local folk hero.
does have the glimpses of the classic kind of tragedy. His Irish father was sent to the British penal colony in Australia for stealing pigs, and the lesson of Ned's youth was that he was drawn to a life of crime because nobody would ever see him as anything more than a criminal. नेड को शायद बचपन से ही पता चल गया था कि वो एक क्राइम की दुनिया में पैदा हुए हैं और बड़े होकर भी शायद एक क्रिमिनल से ज्यादा उनको किसी भी रूप में नहीं देखा जाएगा. So yes, very true. A man can never outrun his fate nor the crimes of his past. There is a very popular question about it कि किस तरीके से history associated है इस story के साथ. Peter Carey की The True History of Kelly Gang. How does it portray the history of this gang? This question we will cover in next video. Keep watching the channel and do not forget to share and subscribe. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link in description to get connected to us for admission. During the classes, you will get the PDF of all the topics, all the relevant topics, and a live discussion with the faculty. So thanks a lot for watching once again, and please do not forget to share and subscribe the channel.